लॉ। आई होप कि मैं ऑडिबल एंड विजिबल होंगी। सो मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि बच्चों क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। एनीवन, कम ऑन बच्चों, एक बार ही बता देना, कंफर्म कर देना कि हाँ मैम आप ऑडिबल एंड विजिबल हो बच्चों, जल्दी से। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त, राइट। सो हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था, तो आज आज भी डिस्कस करना तो है, लेकिन सेकेंड, राइट। आई होप कि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ना बच्चों, सभी ने देखा होगा ना इसके प्रीवियस क्लासेस, राइट। सो एक बार ही कंफर्म करना कि क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। यस यस। हेलो केशव, गुड मॉर्निंग। बच्चों एक बार सेशन को शेयर कर देना थोड़ा, है ना, सेशन को शेयर कर देना बच्चों थोड़ा सा। ओके, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। गुड मॉर्निंग केशव। ओके, चलो आने दो बच्चों को, फिर स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, आने दो बच्चों को फिर स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके ओके, चलिए कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आई होप कि आपको विजिबल हो गया ना बच्चों, विजिबल है ना सभी को। कल तो सब बड़ा टाइम पे आ गए थे। ईशा एक बार सेशन को शेयर कर देना। ओके सो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस ऑन करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त पार्ट 2। सो होप सो कि आपको विजिबल होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंड एनीवन। ओके, सो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंसिडर करें फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग इंडिया एंड म्यांमार एंड थाईलैंड एंड ये ट्राइलैटरल हाईवे है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या ये हाईवे है, मतलब इट इज अ हाईवे इन द मेकिंग अंडर इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। इट विल कनेक्ट न्यू दिल्ली इंडिया एंड Mysore Thailand, or India has also proposed extending the highway to Cambodia. So which one is the correct answer? Anyone? Shubham. Oh, hello. Good morning. कैसे हो शुभम? Okay, I think Shubham is saying C and no one is saying anything. Okay. Keshav, what is your answer? What is your answer? Okay. चल start करते हैं. Start करें बच्चों. So, which of the following statement is correct? बहुत सारे बच्चे अलग अलग बातें करते हैं ना। चलिए मैं बताती हूँ आपको। केशव इज सेइंग बी। ओके, केशव इज सेइंग बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड, नाइस केशव। सो करेक्ट आंसर बी कैसे है, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट जो बी है मतलब कि 1 और 3 सही है, सेकेंड पॉइंट बिल्कुल भी गलत है। एंड आई होप कि आपको विजिबल होगा, राइट। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देखो, बी इज द करेक्ट आंसर. So India Myanmar Thailand trilateral highway, it is a 1360 kilometer long highway in the making under, okay, in the making under India's look east policy. So statement 1 बिल्कुल correct है, and I hope कि आपको visible होगा, right, है ना बच्चों, सभी को क्लियर है ना ये पॉइंट। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया इट विल कनेक्ट मोरे इंडिया एंड द माइसॉर थाईलैंड वाया म्यांमार। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। क्या है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जस्ट वेट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आप ये भी देखना बच्चों, एक सेकंड, किसी ने कुछ कमेंट किया है क्या? ओके, नो वन। सो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, आप देख सकते हो, द रोड इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एशियन इंडिया फ्री ट्रेड area as well as with the rest of Southeast Asia. So India has also proposed extending the highway to Cambodia. बच्चों इंडिया जो है प्रपोज कर रहा है इस हाईवे को बढ़ाने के लिए
कहाँ तक बच्चों? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। सो स्टेटमेंट जो 3 है ना वो करेक्ट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, the proposed approx 3,200 kilometer route from India to Vietnam is known as the East West Economic Corridor। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। आई होप कि आपको क्लियर होगा, राइट? आई होप कि क्लियर होगा आपको। ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द proposed approx 3,200 किलोमीटर, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हाईवे है कनेक्ट करेगा टू द रिवर पोर्ट्स developed along the way at Kalai, also called Kalamayo, and Moniwa of the Chindwin River। Okay, so this is the next question। This is the next question। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको विजिबल होगा। ये कॉरिडोर के बारे में बच्चों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने आपको सीपीईसी के बारे में पढ़ाया था। जल्दी से बताओ, मैंने आपको कल ही पैसेज करवाया है करंट अफेयर्स की क्लास में, है ना बच्चों? कल ही करवाया है। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो कि नहीं मैम आपने नहीं करवाया है, एक्सेट्रा, है ना? कल ही करवाया बच्चों, ठीक है? सो आप मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, क्या बात है, किसी को तो याद है, चलिए अच्छी बात है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी इज नॉट करेक्ट? बताओ बच्चों। CLAT aspirants is saying D and Keshav is saying which one is the correct answer? No one, no one. मनु सिंह इज सेइंग बी। ओ क्या बात है, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, कभी केशव का बी, शुभम का बी, क्लैट एस्पिरेंट्स का सिर्फ अलग है। चलिए देखते हैं कौन सा पॉइंट सही है एंड कौन सा पॉइंट गलत। चेक करें बच्चों, क्या चेक किया जाए, जल्दी से बताओ। तो चेक करते, सी इज द करेक्ट आंसर, और किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं किया। ओ, इससे बड़ी अफसोस वाली बात क्या हो सकती है ना? इससे ज्यादा अफसोस वाली बात क्या हो सकती है, राइट बच्चों? बी मैम मैंने इनकरेक्ट देखा ही नहीं था। ओ, इनकरेक्ट देखा ही नहीं था। किसने किसने ये इनकरेक्ट नहीं देखा था? किसने किसने ये इनकरेक्ट वाला थ्योरी जो है तुम लोगों ने नहीं देखा था? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन क्लियरली मतलब अच्छे से पढ़े, है ना? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने गलत पढ़ा ना तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट? तब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, चलिए, तो होप सो कि आपको विजिबल होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। सीपीईसी के बारे में देखो, सबसे पहले आप ये जानो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का शॉर्ट फॉर्म है सीपीईसी, है ना? इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों, इसके बारे में देखो, सीपीईसी एक कलेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का दैट हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन थ्रू पाकिस्तान बिगिनिंग 2013। So CPEC is a part of China largest belt and road initiative, that is BRIEF, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, and which aims to spread Chinese investment in trade and connectivity infrastructure to bring Central Asian and European market closer, and statement B is correct. So New Delhi has protested the project from its inception since it passed through the large chunk of Pakistan occupied Kashmir। So आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो बच्चों सीपीईसी के बारे में, अगर किसी को नहीं पता है तो, कि ये 3000 किलोमीटर का रूट है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जो कि क्रिएट करता है कॉन्टिगुअस इकोनॉमिक और ट्रेड हब का सीरीज विथ रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हैंज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लिंक करता है चाइना के रेस्टिव वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ जिंगजियांग उगूर ऑटोनोमस रीजन को एंड द न्यू ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान इक्वली इन क्वेट बालूचिस्तान स्टेट। So hence the statement C is not correct. So it is incorrect, right? And आपको ये भी पता होना चाहिए कि म्यूचुअल बेनिफिट है चाइना और पाकिस्तान का। फॉर चाइना द प्रोजेक्ट विल bypass the Strait of Malacca, which can be choke point in case of a conflict with the US or other adversaries. Or on the other hand, Pakistan expects CPC to be a lifeline for its deteriorating economy, leading to a multiplier effect on production and employment generation। ध्यान से देखना, सेकेंड जनरेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? हेलो अरिमर्दन, हेलो वरुण, कैसे हो? ओके, मैंने आपके कमेंट्स से देखे, राइट? होप सो कि आपको क्वेश्चन विजिबल होगा बच्चों। क्या विजिबल है सभी को? नेक्स्ट
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? हैप्पी दीपावली। अभी तक दिवाली चल रहा है, मुझे तो लगा कि आज तो छठ पूजा है। आई थिंक आज सब विश करोगे हैप्पी छठ पूजा। Okay, Subham is saying C, sorry B, and who is saying B or C? Which one is the correct answer? Harimardhan, Varun, Apna Bihar. Oh, क्या बात है शुभम, very good. Oh, you are from Bihar, nice. क्या बात। शुभम आज तो छठ की तैयारी चल रही होगी, पहले बोला नहीं था ना मैं। अच्छा, पहले बोला नहीं था। ओके, तो हम लोगों ने हरिमर्दन दशहरा पे नहीं विश करा, हैप्पी दशहरा। ओके, तो और कोई आंसर करेगा? मिथिला मक्खन has been awarded the GI tag by the union government from which state? Which one? बच्चों, which one is the correct answer? Anyone, anyone? जल्दी से बताओ मुझे, कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चों? केशव is saying B. केशव is saying B. Sure बच्चों, B is the correct answer. B is the correct answer. Very good. Yes, Apna Bihar. So recently, Bihar Mithila Makhan has been awarded the GI tag by the union government, and the GI has been registered in the name of Mithila Lanchil Makhan Utpadak Sangh. Botanical name uska hai Mithila Makhan, is locally known as Makhan in Mithila. So its botanical name is Uriel ferox salis, and its reason कौन कौन से associated है? The special variety of aquatic fox nut is cultivated in the Mithila region of Bihar and adjoining area of Nepal. Micronutrients कौन से हैं आप देख सकते हो बच्चों? Fox nuts are rich in protein and fiber and have various micronutrients such as magnesium, calcium, phosphorus and iron. अच्छा, आप ये देख लो बच्चों कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, ठीक है? So the Mathili Brahmin community extensively uses and distribute makhan during the Kojagra Puja festival. So this move is expected to help grower get the maximum price for their premium produce. ठीक है? Happy नहाय खाए छठ व्रत। Oh, क्या बात है बच्चों। So this is the next question, hope so आपको visible होगा। सभी को visible है ना बच्चों? Next question. Question visible है बच्चों सभी को? जी जी जी। So, with reference to the Universal Declaration of Human Rights, consider the following statement. It was proclaimed by the UN General Assembly in Paris in 1948. So, one more important thing, it was first legal document to set up the fundamental rights to be universally protected. Or बच्चों, it has been translated into over 5,000 languages, है ना? Okay. एनीवन बच्चों, एनीवन कोई भी और भी आंसर करो, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा आंसर करेक्ट है? क्लैट एस्पिरेंट्स केशव, शुभम, अनुपम, अरिमर्दन, एनीवन, वरुण, ए इज द करेक्ट आंसर। श्योर हो आप? श्योर हो? सोच लो। सी, ओके बच्चों, थोड़ा सेशन को शेयर करो, आज तो कोई नहीं आया है। केशव, आज लतिका भी नहीं आई है ना? आज लतिका भी नहीं आई है। नहीं, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बच्चों ने क्या आंसर किया? ACAD, मतलब सिर्फ तुम लोगों ने बी छोड़ा और पता नहीं बी ही आंसर हो जाए तो। सो करेक्ट आंसर डी है, एंड डी किसने किसने किया है? सिर्फ शुभम ने आंसर डी किया है बच्चों। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट in the history of human rights. So it is drafted by representative from different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. The declaration was proclaimed by the
United Nations General Assembly in Paris on 10th December 1948, or General Assembly Resolution 217A as a common standard of achievement for all people and all nations. और आपको पता होना चाहिए, set out for the first time fundamental human rights to be universally protected, and it has been translated into over 500 languages. So the UDHR is widely recognized as having inspired and paved the way for the adoption of more than 70 human rights treaties applied today on a permanent basis at global and regional level, all containing reference to it in their preamble. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करा है? क्या आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करा है? एनीवन? हाँ, आई डोंट नो शुभम, कि इतने लोग देख रहे हैं लेकिन कोई पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? बच्चों, आंसर भी कर दिया करना चाहिए ना कभी कभी, है ना? आंसर भी कभी कभार कर देना चाहिए. ओके. और मनु भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था इससे पहले? अच्छा, कर रहा था अब. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. Singapore Convention recently in news. It is related to. Yes ma'am, but आर्टिकल याद है फिर भूल जाते. हाँ, आर्टिकल के साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है. आप केसेस रिलेट करके याद करो तो शायद सही है ना? आप केसेस रिलेट करके देखो तो शायद सही है. बच्चों, आंसर करो जल्दी से. So which one is the correct answer? Anyone? ओके, राशिद इज सेइंग बी एंड बहुत सारे बी डी सी कह रहे हैं. अब चलिए चेक करते हैं. So, Singapore Convention is related to T. Very good, बच्चों. It means Singapore Convention एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क है for international settlement agreement resulting from mediation. Got it? It's D, बच्चों. D is the correct one. So, it applies to international settlement agreement resulting from mediation concluded by parties to resolve a commercial disputes. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें? एनीवन? नेक्स्ट वन इज दिस वन. आपने टर्म सुना होगा ONORC, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड. ये तो सभी ने सुना है ना बच्चों? वन नेशन वन राशन कार्ड सभी ने सुना है ना? मुझे तो जितना पता है सभी ने सुना है. राइट? यस. देखो, YouTube पे क्लास लेने के लिए ये इसलिए पॉसिबल सही है ना, मतलब मैं क्लासेस इतना रेगुलरली ले पा रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिट है. वरना आप मुझे बोलते हो कि मैम आप स्पेशल क्लास लो, या फिर आप हमारे 60 मिनट्स पूरे हो गए हैं. तो YouTube पे इस तरह का सीन नहीं है बच्चों. सो आप पार्टिसिपेट करो. राइट? So Dhruv is saying C and Gunjan is saying C and Shubham is saying B and Keshav is saying C. Okay. Anyone? Anyone? Varun, are you there? Varun, Shubham, Keshav, Arimardhan, Manu is saying B. Okay, बच्चों. So the correct answer is A and no one is saying A. अभी तक किसी ने आंसर नहीं करा था. ए मतलब सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जो है वो करेक्ट है. इट एम्पावर ऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए migrant beneficiaries to access food grains from any fair price shop. आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर पोर्टल एंड द ई श्रम पोर्टल कम्स अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ONORC. नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट. सो आपको मैं बताती हूँ, इनका एम है कि वो इंश्योर करे हैसल फ्री डिलीवरी ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ऑर्गन टू ऑल माइग्रेटरी बेनिफिशियरीज anywhere in the country through nationwide portability under National Food Security Act.
So statement 2 is incorrect. An ONORC is rolled out by the Ministry of Consumer Affairs for public distribution. Union Labour Ministry has developed a national database of unorganized worker portal and the eShram portal for registration of laborers spread over 400 occupations including in construction, agriculture, fishing, dairy, self-employed and even ASHA and Anganwadi work. मैंने आपको ना इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस करा था। ये कुछ भी नया नहीं है आप लोगों के लिए एंड आई होप कि आपको ये बात पता होगी है ना बच्चों? ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था, राइट? सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैंने इससे रिलेटेड ना पैसेजेस भी करवाए हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस में करवाए, कुछ प्लस क्लासेस में करवाए। सो आप ना एक बार जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? So, recently India concluded exercise Vajra Prahar with which of the following countries? Anyone? US. Achha. Shubham is saying USA. Anyone? और कोई बच्चों जल्दी से बताओ। Dhruv is saying B and no one. जल्दी से बताओ बच्चों आंसर। Anyone? पता नहीं किस समय सब सोते रहते कि आज तो छुट्टी वाली दिन होनी चाहिए ना। आज तो बहुत सारे लोगों की छुट्टी चल रही होगी, राइट? Arimardhan Rathod is saying B and Kishore is saying B. चलो check करते हैं। So correct answer is B. Very good. In news recently, the 13th edition of 21 day India US Joint Special Forces Exercise Vajra Prahar 2022 culminated at Baklo in Himachal Pradesh. Vajra Prahar series of joint exercise aims to share best practice and experience in areas such as joint mission, planning and operational tactics, as also to improve inter-operational operability between special forces of both nations. This annual exercise is hosted alternatively between India and US, right? हम स्कूल टाइम अच्छा स्कूल अच्छा okay. So बच्चों this is the next question and I hope कि आपको visible हो। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में मैंने रखा है, क्या है बच्चों? इट इज स्पेशल अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। बट आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्पेशल मतलब जिनके स्कूल नहीं है, जैसे आई थिंक लतिका के शायद नहीं है स्कूल। शुभम इज सेइंग बी, ओके। एनीवन? ओके बी एंड सी सारे बच्चे कह रहे हैं। बच्चों व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? Arimadan is saying B. Okay, Manu is saying B. So the correct answer is D. No one is saying B. So D क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। आपने फिर से क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या बच्चों? आपने पता नहीं पर वो अच्छा, आपने फिर से क्वेश्चन गलत पढ़ा है। एनीवन? जल्दी से बताइए, फिर से क्वेश्चन गलत पढ़ा है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों it is not correct. Which one is the not correct? So such a notice is then entered into the marriage notice book and kept confidential. कुछ ऐसा होता है क्या? मैंने तो नहीं सुना। So the Special Marriage Act 1954. Special Marriage Act 1954 is an act of the Parliament of India with provision of civil marriage or registered marriage. The act deals with intercaste, interreligious marriage, hence statement 1 is correct, right? Okay. So, intercaste marriage is a marriage between people of two different castes. Interreligious marriage is a marriage between people of two different religions. Applicability क्या है? Any person irrespective of religion, this act is applicable to the entire territory of India and extend to intending spouses who are both. So, Indian nationals, Indian national living abroad, and the statement B is correct. So, notice of 30 days क्या है? The SMA require couple getting married under it to give a notice to the marriage office 30 days before the date of marriage
Hence, the statement C is correct. Such a notice is then entered into the marriage not notice book maintained by the marriage officer, which can be inspected by any person desirous of inspecting the same. So, this is not a confidential part. So, displaying the notice and objection, these notice have to be also fixed at a conspicuous place in the office of the marriage officer so that anyone can raise an objection to the marriage. So, hence, the statement D is not correct. क्लियर है बोलेगा एप्लीकेबल नहीं फॉरनर के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा सभी के लिए एप्लीकेबल है इंटर रिलीजन मैरिज और यहाँ पे इंडियन नेशनल्स और यहाँ पे लिखा एनी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सभी के लिए फॉरनर के लिए बात नहीं हो रही है हाँ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड टू intending spouses who are both इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड लेकिन वो इंडियन होने चाहिए ना गुड मॉर्निंग लतिका सो ज़ैपोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज में देखा गया था वो कहाँ से रिलेटेड है जापान यूक्रेन ईरान और पाकिस्तान यूक्रेन श्योर श्योर सोच लो जल्दी से बताओ बच्चों कौन इज द करेक्ट आंसर ओके जस्ट चेक चलो इसका आंसर आपको मिलेगा एक ब्रेक के बाद है ना आपको मिलेगा इस ब्रेक के बाद जस्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम हो गया ब्रेक का है ना आज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया सो बच्चों ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है फॉर 2023 एंड 24 क्लैट के लिए तो सभी को पता है बच्चों हो चुका है और एलिट का होने वाला है 29 अक्टूबर को इट मीन्स का बच्चों क्या वो डेट जल्दी आने वाली है क्या वो डेट कल ही है हाँ एग्जैक्टली so know your all India rank and assess your preparation level question based on the latest exam pattern rank 1 rank 2 rank 3 rank 4 to 5 6 to 10 वाले को scholarship मिलेगा so use the code of mine that is PA live बहुत ही आसान सा कोड है बच्चों आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही इजी सा so Unacademy present you a new YouTube channel Unacademy Legal World one stop solution for the class journey scan here to subscribe now Unacademy learner who made it to the top and live these are the learner next time आपके नाम होने चाहिए SSC name okay so one more important thing CLAT iconic program it is different from plus में मिलता है basic plan to get you started India's best educator day life classes life test quiz structured courses बट अगर आप अपने प्रोफेशन के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाहते हो तो आइकॉनिक ज्वाइन कर लो आपको ये एक्स्ट्रा सारे फैसिलिटीज मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जैसे 1-to-1 लैब मेंटरशिप लैब डॉट सॉल्विंग दिस एंड पैराडाइम क्लासेस So one more important thing आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन प्लान यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज पीए लाइव तो यूज कर लेते हैं ना कभी कभी पीए लाइव भी यूज कर लेते हैं आसान सा रेफरल कोड है डाल के तो देख ले सकते हो सो CLAT and ELIT intensive crash course for CLAT 2023 aspirants language and English and starting on October 28, 2022 by these educator और मैं भी आपको जीके में गाइड कर दी हूँ So one more important thing आप देख सकते हो Law Star intensive crash course for NLCR DUL LLB MSc 2023 aspirants language English and starting on October 27, 2022 by these educator और मैंने कल ही क्लास लिया होप जो आपने अटेंड करा होगा So one more important thing only practice intensive course batch for 2023 aspirants language and English starting on October 27, 2022 by these educator. Ask me anything a special class series by top educator to resolve all your queries before you attempt your class 2023 by these educator. So one more important thing, join your dream and NLU college with Unacademy CLAT, talk to your academic counselor for assistance, call us on 858588585, Monday to Friday 10 a.m. to 7 p.m. So back to the pavilion. बैक टू द पवेलियन हम लोगों को किस पे डिस्कशन करनी थी जो okay so the correct answer is B very good it means Ukraine right Ukraine is the correct answer nice जिसने भी आंसर करा बहुत okay
So the correct answer is Ukraine. A team of officials from the International Atomic Energy एक second, Energy Agency also आपको visible होगा जो कि arrived हुई है यूक्रेन में to assess the condition of the Zaporizhzhia nuclear plant. So Zaporizhzhia एक important town है यूक्रेन में, southeast that houses the largest nuclear power plant in Europe. It is all about 40 kilometer 25 mile up the Dnieper River from the nuclear plant. Ukraine has 4 nuclear power stations comprising 15 reactors. कार्तिक नहीं आता नहीं अरे मदन पता नहीं कार्तिक को क्या हो गया I don't know कि कहाँ busy है वो. So the plant at Zaporizhzhia has 6 reactors, which together produce about 5,700 megawatt of electricity. Nuclear energy caters to about half of Ukraine power demand. Okay, so this one is the next question. बच्चों questions visible हैं आपको anyone? ध्यान से पढ़िएगा PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना. Keshav is saying D and anyone? Anyone? Kamal is saying D. Shubham, what is your answer? Shubham, what is your answer? लतिका का भी आंसर डी से चेक करते हैं. करेक्ट आंसर है सी और सी किसने करा है सिर्फ ध्रुव ने आंसर दिया है मुझे सी. सी मतलब बच्चों 2 3 4 फर्स्ट पॉइंट क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ. बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट facility of rupees 50,000 to every eligible adult. So creation of credit guarantee fund to provide banks some guarantee against defaults. Insurance accident cover up to 1 lakh and life cover of rupees 30,000 on account opened between 15th August 2014 to 31st January 2015. D option क्या है? D option is 1, 2, 3 and 4. इतना लेट पूछ रहा है. हेलो परेशान बालक बहुत देर कर दिया तुमने क्लास ज्वाइन करने में. सो पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर चलिए डिस्कस करते हैं. प्रधानमंत्री जन धन योजना नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिसेंटली कंप्लीटेड 8 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. पीएमजेडीवाई एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जो इंश्योर करता है एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली बैंकिंग saving and deposit account remittances credit insurance pension and in an affordable manner. 6 पिलर कौन कौन से बच्चों ध्यान से देखना चाहिए. लॉन्च किया गया था ये स्कीम. यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज ब्रांच एंड वीसी एंड बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 to every eligible adult. Statement 1 is not correct. Financial literacy program promoting saving, use of ATM, getting ready for credit, availing insurance and pension using basic mobile phone for banks. Creation of Credit Guarantee Act to provide banks some guarantee against default. Statement 2 is correct. Accident cover up to 1 lakh and life cover of up to 30,000 on account open between 13th August 2014 to 31st January 2015. Hence, statement 3 is correct. Hello. So, pension scheme for unorganized sector statement 4 is correct. And I hope कि सभी को ये सारे points clear होंगे. So, this one is the net is 0. अच्छा क्या समझते हो नेट जीरो से?
बच्चों व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नेट जीरो के बारे में आप क्या जानते हैं? सी, ओके। एनीवन इज सेइंग द आंसर सी डी, क्योंकि सिर्फ आंसर मुझे एक बच्चों से मिला है। एनीवन? ओके, चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ए है, और किसी ने भी ए नहीं करा, सभी ने बी कहा, सभी ने सी कहा, सभी ने डी कहा, बट ए किसी ने नहीं कहा। अच्छा, सिर्फ पॉइंट वन करेक्ट है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सो नेट जीरो, अ स्टेट इन विच कंट्री emission are compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere is called net zero state. It is also referred to a carbon neutrality, and statement one is correct, getting India to net zero report. So this report is recently released in New Delhi, and it is named as Getting India to Net Zero. Statement 2 is incorrect. The report was released by former Australian Prime Minister Kevin Rudd, also President of Asia Society Policy Institute, former UN Secretary General and Global Green Growth Institute President and Chair Ban Ki-moon, and International Financial Corporation Head and Director of Climate Business, that is Vivek Pathak, and former Indian Foreign Secretary Shyam Saran Pancham. Okay, so Panchamrit strategy थी बच्चों, वो क्या थी? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंचामृत स्ट्रैटेजी अनाउंस करा था एट द कोप 26 इन ग्लासगो कॉन्फ्रेंस इनटू एनहांस क्लाइमेट टारगेट। अभी पांच तरह की अमृत क्या है, ध्यान से देखना। India will increase its non-fossil fuel energy capacity to 500 gigawatt by 2030. It will meet 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030, and the total projected carbon emission will be reduced by 1 billion ton from now through 2030. And the carbon intensity of its economy will be brought down to less than 45%. And India will achieve its target of net zero by 2070. Hence, statement 3 is incorrect. Okay, got it. So this one is the next question. Come on. बहुत interesting है. पढ़ो पढ़ो. She was the Naga, spiritual and political leader, who belonged to the Rongmei tribe, who also has a Kabui known as a. She had an armed uprising against the British in Manipur, Nagaland, and Assam. Jawaharlal Nehru called her the daughter of the hills, and and gave her the title Rani or Queen, acknowledging her role in the struggle against the British in 1972. She was awarded the Mara Patra by the Government of India for her contribution to the freedom movement. She was कौन? Sarojini Naidu, Rani Lakshmibai, Aruna Asaf Ali और Rani Gaidinliu. क्लियर है बच्चों? विजिबल है ना? डी में है रानी गैदिनलियू। एवन बच्चों, जल्दी से बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्या बात है, रानी गैदिनलियू इज द करेक्ट आंसर, एंड बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर करा है। गुंजन ने, ध्रुव ने एंड पूजा ने। यस, वेरी गुड अनुपम तिवारी, द करेक्ट आंसर इज डी। आप देख सकते हो, Rani Gaidinliu was born on 26 January 1950 and in the present day Tamenglong district of Manipur, and died in 1993.
She was the Naga spiritual and political leader who belonged to the Rongmei tribe, also known as Kabui. She led an armed uprising against the British in Manipur, Nagaland, and Assam. In 1927, at the age of 13, Gaidinliu, along her cousin Haipao Jadonang, joined the Harakka movement, which aimed at the revival of the Naga tribal religion and established self-rule of the Naga, ending the British rule. Jawaharlal Nehru called her daughter of the hill and gave her the title Rani or Queen, acknowledging her role in the struggle against British. So in 1972, she was awarded the Matra Patra by the government of India for her contribution to the freedom movement. उन्हें बच्चों पद्म भूषण में मिला 1982 को 1996 को यूनियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टेज स्टैम्प कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इशू करा उनके ओनर में विवेकानंद सेवा सम्मान in 1983 and स्त्री शक्ति पुरस्कार in 1991 मिला उन्हें. She posthumously was awarded the Bhagwan Birsa Munda Puraskar in 1996. So the government of India also issued a commemorative stamp in her honor in the same year. So the center also realized rupees 100 commemorative coin in 2015 and on the occasion of 100th birth anniversary. सो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो कमीशन है बच्चों वो फास्ट पेट्रोल वेसल के अंडर होता है ICGS रानी गैरिल्यू नाम है 2016 में रखा गया था. ठीक है. सो बहुत कम बच्चों ने करेक्ट आंसर करा एंड दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. This one is the next question. I think this is the second last question, right? I think this is the second last question. ओके बहुत सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. बहुत सारे डिफरेंट. लतिका इज थिंग बी लगता है. बच्चों एक बार देखो क्या करेक्ट आंसर क्या है. So D is the correct answer. D is the correct answer. Recently, the government has amended rules and increased post-retirement allowances to CGI, ST and ST judges. So, statement 1 कैसे correct है? Department of Justice has formulated a scheme on access to justice named Designing Innovating Solution and Holistic Access to Justice. दिशा जिसका short form है. टू करेक्ट है बच्चों. इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2021 to 2026. स्टेटमेंट 3 करेक्ट कैसे है? दिशा एम्स टू मर्ज डिफरेंट एक्सेस टू जस्टिस नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर प्रोग्राम being implemented by DOJ while simultaneously upscaling them to all India level. So one of the key objective of Disha is implementation of pan India legal literacy and legal awareness program. बच्चों क्लियर है बच्चों? Okay. So this one is the next question. This one is the next question. Okay. And I think this is the last question, bachcho. This is the last question. Consider the following statement regarding the International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. क्या ये अडॉप्ट किया गया इस by the conference at the International Maritime Organization IMO in London, or the convention prescribe minimum standard relating to training, certification and watchkeeping for seafarers, or India is a signatory, India is a signatory to the convention? Which one is the correct answer? Anyone? Latika, Gunjan, Shubham, Dhruv, Pooja, जल्दी से बताइए बच्चों. आने लगे different answers. Okay. केशव is saying B. Okay. शुभम is saying C and बहुत सारे बच्चे कुछ और कह रहे. चलिए चेक करें क्या? चेक करें बच्चों. चेक करें. Let's see the answer. Which one is the correct answer? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? Which one is the correct answer बच्चों? So the correct answer is D and किसी ने भी आंसर D नहीं करा है, right?
किसी ने भी आंसर डी नहीं करा, ध्यान से देखना। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेयरर 1978, ओरिजिन अमेंडमेंट एंड एनैक्टमेंट देखना। STCW was adopted in 1978 by a conference at the International Maritime Organization in London and entered into force in 1984, hence statement 1 is correct. India is a signatory to the convention, hence statement 3 is correct. So the convention was significantly amended in 1995 and 2010, entered into force on 1st January 2012. So ये जो कन्वेंशन है बच्चों, वो प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेयरर विच कंट्रीज आर ऑब्लाइज टू मीट और एक्सीड। सो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1978 में STCW कन्वेंशन जो है पहली बार इस्टेब्लिश की गई थी, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन and watch keeping for seafarer on an international level. Previously, the minimum standard of training, certification, and watch keeping of officers and rating were established by individual government, usually without reference to practice in other countries. So, as a result, minimum standard and procedure varied widely, even though shipping is extremely international by nature. Right? So, these are the important points and these are the questions जो कि मैंने आपको करवाए हैं। एंड बच्चों आज के लिए इतना ही। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट डे स्टैटिक जीके की क्लास होगी बच्चों। किस चीज़ की क्लास होगी? स्टैटिक जीके की क्लास होगी कल। तो कल भी 10 AM पे ही होगी। और आज मेरी 2+ क्लास है। होप सो आपको शेड्यूल में दिख रहा होगा, आप ज़रूर ज्वाइन करना। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, किसी तरीके का कोई भी क्वेरी होगा, तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना होगा बच्चों, सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन, दैट इज PL। क्या यूज करना है बच्चों आपको? PLIve इज द कोड, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, टेक केयर। ओके बाय।